हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी टेक बहू, जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज सुबह मेरे साथ ही हुई एक सिचुएशन जिससे निकलने के लिए मुझे लगा बहुत सारा टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ वीडियो ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो सुबह मैं बनाई थी चावल और चावल रखे घर में भून। तो उसके बाद जब थोड़ी सी जलने की स्मेल आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे चावल नीचे लग गए हैं। और उसके बाद जो मेरा पॉट था वो पॉट के बेस पे पूरा ही ब्लैक हो गया था, और मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या किया to get rid of that in the easiest and the most inexpensive way. So without any ado, let's get started. So this is how it looks. I've tried putting it in water but nothing has helped. And now I am going to do a hack. Let's see how it works. So we're going to use equal quantities of vinegar and water and put it in the pan. So you have to just add enough to cover the whole thing. Now we're going to put this on high and then we're going to leave it. Once it boils, then we're going to leave it on a medium flame for 5 to 10 minutes. If you see, it has already started doing some action. There's like a round circle of white stuff. It has already started doing it. If I just move it a little bit, you'll be able to see that white circle more clearly. So we'll just wait for it to boil. So once it has come to this boiling stage, which we're going to reduce the flame to a medium flame, 5 maybe, and then we're just going to wait for about 10 minutes. So this is how it's become, and I'm pretty sure it's going to be so much more easier to clean this. I'm just going to wash this one. So after washing it, this is how it looks like. So I haven't scrubbed it yet. So there are two options. I could actually just do the whole process of the vinegar and water again, or scrub it a little. So after a little more than a little scrubbing, I was able to clean the base. I think maybe it needs another round and then it'll be perfectly clean. To help me, I used this sponge. In fact, this part of the Scotch-Brite sponge was quite nice and rough. तो आपने देखा कि ये कैसे मैंने किया। मुझे कुल मिला के एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स लग गए थे इस काम में, बॉइलिंग का टाइम सेपरेट। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बट आई थिंक आई गॉट माई सेल्फ आउट। आई होप आपको ये टिप और ट्रिक अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या करते हैं। इज इट बेटर, इज इट फास्टर? इट्स ऑलवेज नाइस टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बहू साइनिंग ऑफ।